So the story is something like this. The story is perhaps even the story is like is very old. पुराने ज़माने में जब ये ज़माने की बात है जब ये इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट मैं जल्दी बैठा हूँ ये उस ज़माने की बात है the story goes back to the time of industrial age. When people started making machines. और जब उन्होंने machines बनानी शुरू की तो शुरू में जो machines थी वो कुछ they were electronic circuits. Okay? They were electronic circuits. Electronic circuit किसका होता है? How is electronic circuit work? Gates वगैरह. Gates, wires, और बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं. There are very complicated circuits. Wires को आप ऊपर नीचे करते हैं, so on so forth, right? Alright, so there was a person. How many of you are from ICS? Anyone? I mean, anybody remember the name of Charles Babbage? Yes. Who was Charles Babbage? Why is named as father of computer? He invented what? Why we named him as a father of computer? Actually, he came up with this wonderful idea of a machine which is called not a abacus is a tool. It's not a computer. Abacus is something जो क्या ना आप समझ लें कि वो abacus को मैं देखना होगा. Abacus को इस तरह की चीज होती है कि आप there are two rods और उससे लगाने में यहाँ पे wires लगी होती हैं and there are beads there और वो beads को ऊपर नीचे करते करते that is not a computer. That is something like a helping machine. You can say कि वो counting के लिए मैं अपने हाथों को कैसे calculate से लगाऊँ. Yes. Okay, दिन को मैं let's say ये मेरा number को generate कर रहा है. So I can say something like that. Okay, but that's not a computer. What he invented was it's actually called analytical engine. Okay. उसने जब analytical engine बनाया था तो that was nothing but a number crunching machine. Number crunching machine means उसमें ना कुछ operations होते हैं, additions, multiplication, और वो बहुत ही खूबसूरत structure है. And if you go on internet and try to search that analytical engine, that's a really masterpiece of electronics. Electronics engineering का एक बहुत ही खूबसूरत masterpiece है. It's a masterpiece of अच्छा, but the thing is of electronics and mechanical engineering. Okay. Anyone of you know about Ada Lovelace? Ada Lovelace. So this guy who was Charles Babbage was an old kind of a old saint. What he used to do is he used to invite people to his place. That is actually, I mean, उसको एक society होती that was called Royal Society of Science. And at that time, science was considered as some kind of a I mean, आप ये समझने के लिए जादूगरी की दिखाते हैं ना, करतब दिखाने वाली चीज़. I mean, it was like just for fun. Okay, but it was not like used for the purpose we use now. Okay, and what he used to do was he was actually a mechanical and electronics engineer. And he used to do was he used to make machines. Okay. अच्छा, उस ज़माने में एक और बड़ी ज़बरदस्त इन्वेंशन हुई थी. That invention was called Jacquard loop.
And that jacquard loom was something like this. कि उस ज़माने में एक जो एक मशीन थी जिन्होंने बनाई, और वो मशीन उस तरह की थी कि जो कपड़े के ऊपर इफ यू हैव क्लोथ्स, उस पर जो प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है ना, प्रिंटिंग के लिए कोई एक डिज़ाइन यूज़ होता है। सो व्हाट दे हैव मेड इज समथिंग लाइक दिस कि यहाँ पर इट्स अ मशीन, ये मैं एग्जैक्ट मशीन नहीं बता रहा, अगर मैं ढूंढूँ तो जाके आप देख सकते हैं जैकेट लूम के पास। ओके, उसमें ना दो तरह की इनपुट्स आती हैं, यहाँ से कपड़ा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोथ्स क्लॉथ क्या कहते हैं कपड़े को, क्लॉथ गोज इन दिस फैशन, और वो यहाँ से इन करता है। यहाँ पर मशीन्स हैं, मशीन में ना एक्चुअली यहाँ पर कलर्स की पूरी स्कीम पड़ी गई है, ठीक है। और यहाँ पर ना एक्चुअली एक बड़ा सा एक कागज जाता है, एंड दैट्स नॉट दैट इज समथिंग जिसमें ना इस तरह के डॉट्स होते हैं, ठीक है। एंड दैट डॉट पैटर्न इज एक्चुअली a pattern on which actually this machine works. So for example यहाँ पे कुछ डॉट्स का पैटर्न ये बताएगा कि फॉर एग्जांपल मैंने कलर कौन सा चूज करना है, और फॉर एग्जांपल इसके किस एरिया में कलर कितना करना है, ये बस ना। That was invention which came about in that era. Okay, jacquard loom कहते हैं। और उसके रिलेटेड बहुत सारी खूबसूरत कहानियाँ हैं कि how people actually reacted to those machines. People said something like this, that's I mean, these machines are something which will going to annihilate human beings as a resource. यानी for example, आपने सुना होगा कि कभी इस तरह की बात है, भाई मशीन आ जाएगी तो इंसान का क्या करेगा, यानी उसको अगर मशीन्स आ जाएंगी तो फॉर एग्जाम्पल अगर फॉन्ट्स आ गए कंप्यूटर पे तो खताती वाला जो खताती कौन बनेगा। तो द थिंग इज एग्जैक्टली द सेम वे व्हेन मशीन्स केम, तो एक्चुअली बहुत बड़ा रिवोल्ट उठा लोगों के दरम्यान में कि भाई अगर ये काम हो जाएगा तो फिर कपड़ों में जो हम खुद करते हैं काम वो कैसे होगा। एंड दिस इज द टाइम ऑफ द that is actually the time of Renaissance. Renaissance was the time where West started to wake up. Europe actually rise up. ठीक है उसको, और उसमें जो सबसे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो इस मूवमेंट, इस रिवोल्ट को क्रश करना, कि हाउ एक्चुअली दे क्रश दैट रिवोल्ट। उन्होंने एक्चुअली लॉ का पार्ट बना लिया था, और लॉ के पार्ट में कुछ इस तरह की चीज़ थी जो कि आप अब सुन के बड़े हैरान हो गए कि उन्होंने तो what actually happened is कि इन्होंने लोगों ने क्या कहा कि भाई हम मशीन्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, ओके, जो भी कहीं भी इस तरह की हुई। एंड व्हाट दे हैव व्हाट एक्चुअली ब्रिटिश उस वक्त की जो मुल्क था उसमें उन्होंने एक आइन में एक तरमीम की, जिसमें उनका कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया डेमोक्रेसी। सो दे मेड ए लॉ, एंड दैट लॉ वाज इफ यू हर्ट एनी मशीन द पनिशमेंट इज कैपिटल punishment. Capital punishment means you will be hanged to death. Okay? So just, I mean, that was not an easy decision. That was something which actually changed everything. I mean, industrial revolution West में जब आता है, तो उस वक्त हमारे यहाँ actually printing press पे ban होता है. And that becomes actually the reason that we fell 300 years behind. वहाँ पर जब प्रिंटिंग प्रेस आता है, जब मशीन आती है, तो इल्म जो है वो हर एक की मीरास में होता है। So everybody gets the book, everybody gets scientific work, everybody gets I mean जितनी भी नॉलेज है वो सब में स्प्रेड होती है, जो पहले सिर्फ चंद लोगों के हाथ में होती थी. It used to be in few people's luxury to be there, but now with printing press, the knowledge has spread all over. And at the same time, by the way, it's the time when we in Mughal Empire, if you are talking about in this subcontinent were the empire here was the richest empire in the entire history of human being. Human beings की जितनी भी हिस्ट्री हुई है उसमें इतनी बड़ी civilization अमीर नहीं थी. The richest civilization was
that Indian civilization जिसमें Mughal empires थी, and within few centuries everything crumbled to dust just because we did not accepted that industrial revolution which West actually provided. Okay? So ये बहुत ही खूबसूरत story है. If you try to dig down into that history, that's a wonderful story. All right. So the nice story about why I was telling you that history, because that has some connections which are important. Now, Ada Lovelace was a beautiful girl of teenage, and anybody know Lord Byron? So Lord Byron was actually a prince जिसकी वो बेटी थी, और उसकी बड़ी एक ज़बरदस्त स्टोरी है. If you really want to be interested in that, that's it. But Ada Lovelace, when saw this jacquard room, and I mean, by the way, जो Ada Lovelace said that she belonged to that royal family. Royal family को मैं आपको बताया कि royal family को ही वो actually जो scientific work दिखाई जाती है, जो भी वो करता था. So she had she used to be very close to Charles Babbage, and when she saw Charles Babbage, that analytical engine, that machine which used to do numbers, addition, subtraction, or something like that, she came up with this wonderful idea. And also she saw this machine, and that machine was jacquard. Okay. She came up with this wonderful idea, okay, and she said to Charles Babbage, okay, we can actually come up with a notation through which we can actually program your analytical engine. Meaning, we can actually make a language in which we can give instructions, and that those instructions will be general purpose instructions. Through using those instructions, we can actually program your analytical engine to do whatever we want. आपको ये बात समझ आ रही है क्या बात कर रहे हैं? The most surprising thing is when Ada Lovelace gave this idea, nobody understood. And it took around 100 to 150 years to even understand what Ada Lovelace was saying, until actually programming languages arrived. Okay? That's a wonderful idea. So what actually happened was something like this. In the previous years, Ada Lovelace की वो बात करने के बाद भी people usually what he used to do was this, something like this. कि वो क्या करते थे कि आपका ये मशीन है, इस machine, I mean, if you go and Google this picture, it's called ENIAC. Do you know about ENIAC? ENIAC was around in 1950s, was created one of the biggest computer, and that computer was something like used to be this. And it was so big, and it was such a huge, and what it used to do was, let's say, 20-digit addition. Okay? I mean, it used to consume so much power कि उस ज़माने का सबसे मशहूर जो शहर था ना, that was called Philadelphia. And Philadelphia when ENIAC used to start, the whole city's बत्ती जो है वो चली जाती. It was so huge, and it was so much of power consumption. And thanks to the science, I mean, इससे कई गुना काम हमारा आज का ये छोटा सा हमारा मोबाइल का होता है. Thanks to transistors and so on so forth. अच्छा, but in that time where I'm talking about this ENIAC, people used to program, but programming was something like this. Okay, अगर for example
हमने अपने प्रोग्राम मेरी मशीन है जो कोई स्पेसिफिक काम करती है. I have a machine which performs a certain task. If I want to change that machine, if we want to do something different from that, for I'm expecting कि ये जो machine है हमारी, it does something else now. What we used to do was कि हम actually अपनी machine को change करते थे. So हमें नई तारें ऐड करनी पड़ती थी, हमें नया power structure लाना पड़ता. We used to change the structure. Okay? All right. अच्छा. But then somebody came with this idea कि हम actually एक general purpose machine बना रहे हैं. And what we're going to do is we're going to give the instructions in the form of turn on and turn off. Okay? And what will happen is it was something like again the Jacquard loom. और Jacquard loom की ही कोई extensions चल गई थी बाहर. पर वो क्या करते थे कि यहाँ पर ना ये हमारी मशीन है. मशीन को actually यहाँ पर ना आप समझ यहाँ पे dots हैं. ठीक है? और उन dots को ना either they used to fill it or they used to open it. Fill और open का हमारे यहाँ जो मतलब होता है in our lifetime जो हम देखते हैं हमारी actually binary representation की बात होती है. It's either 0 or 1. Okay? But look at this. Now what happened is कि आपके ना उस ज़माने में punch card होते थे. तो punch card क्या होता है हमारे पास एक card होता है जिसके ऊपर actually ये zeros ones की form में ना dots होते थे. ठीक है? तो dot या तो fill होता था या out fill नहीं होता. तो program आप actually hard code इसमें डालते थे. ठीक है? प्रोग्राम आपका कुछ यूं दिखता था. Let me show you. ठीक है? तो for example अगर मैं इसको एक sequence में डिस्प्ले करूँ ना in dots तो प्रोग्राम हमारा कुछ यूं दिखता था. 1 0 0 1 0 0 1 क्या पता नहीं हाँ? All right. I mean, can you understand this code? No. I mean, if I make this code and that represent something like hello world. It used to. I mean, what is this program? This program is doing it is actually printing hello world on the screen. जो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन है, उसके लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर ये hello world दिखाता है. ठीक? इस तरह बड़ी सारी लिखी. I mean, is it even understandable? No. Right? Somebody came up with this idea, and that idea was something like this. और उसने कहा कि यार ऐसा करते हैं मैं तुम्हें ना उसने somebody made this and nobody noticed it. Okay, and that was such a remarkable idea. And that idea was something like this. उसने कहा मैं एक काम करता हूँ. उसने ना एक इसी तरह का कार्ड बनाया और उसने कहा ऐसा करता हूँ देखो मेरा एक बड़ा जनरल पर्पस कार्ड है. और but the most important thing here is in this card what you will going to do is you will not going to write this. You will going to write in this fashion. Okay, उसने पूरा उसका writing procedure भी दे दिया. अब बटन होते थे और जो लिखते थे वो हमें नजर आते थे कि वो हम क्या लिख रहे हैं. Okay, उसने kind of एक editor बनाया और उसमें हम जो लिखते थे ना कीबोर्ड था वो कीबोर्ड के पीछे उसे पूरी वायरिंग सेट की हुई थी और वो पूरा स्ट्रक्चर था और जो लिखा हुआ जाता था वो इस तरह. For example, क्या लिखा हुआ? Move. AX, comma, and move. BX, comma, that's it. Okay? और फिर था add AX, BX. और let's say यहाँ पे CX. Alright? और फिर था for example move. और यहाँ पे कुछ मेमोरी होती थी whatever 0x800 और इस पे जाके लिखा हुआ 6. Can you understand this? How? I mean, which one of them is more understanding? This or this? This.
That language was the first one, which was written by some guy, some anonymous. And what we started making is कि हम इसमें जाके कोड करते थे और वो हमें कोड यूज देता था, ओके? और बट हम जिस एडिटर में लिखते थे ना, वो सबसे पहला काम ये करता था, वो दिखाता आपको ये था, बट इसको वो इसमें ट्रांसलेट करता, ओके? The nice thing about that editor is now you can actually read what you are writing. Okay? That was actually the first compiler which was written, and the language for which it was written named as assembly language. Okay? This is called assembly language. इसमें एक्चुअली आप लिखते थे और एक्चुअली जो ये कंपाइलर्स का है, जो इसको असेंबलर कहते हैं, वो इसे कन्वर्ट किसमें करता था? इसको बाइनरी प्रोग्रामेशन का। बाइनरी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मूव AX 10। इसका मतलब है 10 वैल्यू AX में डालो। AX कोई भी वेरिएबल। ठीक है? तुम लोग अभी DFD पढ़ो। You will going to realize that this AX is actually a register. Some memory is. This 20 means move BX 20, which means 20 BX is stored. Store 20 in BX. Add CX AX BX, which means add AX plus BX. And store it to CX. And this is move this 0x800. This is actually the address of video memory. Your screen is the उस screen का actually the address. वो कहता है ये जो CX में वैल्यू आपने रखी है जो 30 है, वो किधर रख दिया जाके? वो वीडियो मेमोरी में रखें। ये इसका मतलब बनता है, but the thing is, this is much more understandable. Okay, all right. That step was a revolution. That step was a revolution. What happened after this is कि एक पूरी की पूरी नई दुनिया खुली। और वो नई दुनिया ये थी कि people said कि ये जो इसने रैपर चढ़ाया है, इसको हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं, why not I make another wrapper? What I will going to do is I will going to make another wrapper in which I will going to write in this fashion. Let's say int v is equal to 10, int v2 is equal to 20, and integer result is equal to v1 plus v2 and cout result. And what we will going to do is we are going to take this program and we will convert it into assembly language, and the assembler will going to convert it into what a beautiful transformation. And people did not stop here. People made thousands and thousands of languages. And now there are amazing and really powerful languages available. Okay? For example, Scratch. When you look at Scratch, Scratch is just drag and drop of your sprites, and you can put scripts in block fashion. And in the end, it generates again a symbolic representation of zeros and ones. Really amazing. Okay? That was something really incredible. Okay? That stage of progress, evolution of languages came up after the idea of Ada Lovelace, and the first person who actually understood what Ada Lovelace was saying. Okay? The first rapper, whoever did this was really amazing. Okay? Alright. Now, by the way, ये सारी तफसील आप next आने वाले कोर्सेज में बड़े तफसील से पढ़ेंगे. There is assembly language which you will want to learn, and then there is computer architecture in which you will going to build this, okay, which will run all these zeros and ones.
and how it will going to configure on the basis of these instructions. Okay? Alright? And then there's a DLD. DLD is a designing inside of this machine. Okay? You're actually right now here. And we are already on this one. Okay? Then we're going to reach there and we're going to see how we're going to learn this assembly language. Okay? And then you will going to learn about compiler construction, which will going to tell you the whole panoramic picture that how these transformations happen. Okay? How you convert one language to other and to other to reach to binary representation, which is actually accessible and understandable to the machine. Okay? Alright? That's the whole picture which you should actually understand. Okay? As a computer graduate, you must understand this whole story. Okay? Alright? Now, let's move forward. Why I have told you this story? Why I told you this story? The story is something like this. When people made languages, the whole idea of making new languages was what? Can anybody guess? Make better languages, right? Such language which is more understandable to human being. Because in the end, who have to code? Human beings, right? So the thing is, can we design a language which should represent the exact same perspective which how human beings think about its universe? You must like can we design a language which should depict the exact way how human beings understand about its stuff? Okay? And that language, that paradigm of language is actually called object-oriented programming. Okay? That paradigm is actually the paradigm which we are about to go to. Okay? And that representation, that language, that paradigm is actually called object-oriented programming. And I will going to show you why it's so natural. Why it is so natural for human beings to comprehend. Okay? Alright, look at this. अच्छा मुझे एक बात बताएं. Let me erase this down. मुझे एक बात बताएं. आप अपनी सराउंडिंग में जब यूनिवर्स को परसीव करते हैं तो आप कैसे परसीव करते हैं? मैं जब अपनी सराउंडिंग में देखता हूँ चीजों को तो मैं कैसे देखता हूँ? हाँ? तो मैं देखता हूँ. लेकिन मुझे जो अपनी सराउंडिंग में नजर आता है वो क्या? 3D तो 3D व्यू है ना, वो ठीक है. लेकिन नेचर में जो चीजें मुझे नजर आती हैं, जो मैं चीजों का लफ्ज बोल रहा हूँ, ये क्या है? They are actually objects. They are actually objects. What I was going to perceive, what all human beings actually do is they actually look around in perspective of objects. And what are objects? Objects are actually all the things which are around us. Okay? That is, and also try to note this thing. मुझे एक बात बताएं. For example, मैं अगर पूरी चीज को perceive करूँ, for example, मैं कहता हूँ कि मैंने आप लोगों में से कितने जिन्होंने कार देखी है? कार देखी यूज भी की होगी और यूज करते हुए लोगों को देखा भी होगा. ठीक है? अच्छा मुझे बात है. अभी तक जो आप कोड करते आ रहे थे, अभी तक जो भी आप कोड करते थे, उनमें उस कोडिंग में फॉर एग्जांपल आपने कोई भी कोड लिखा है, बड़ा सारा कोड लिखा है, फॉर एग्जांपल आपने बड़ा कोड लिखा है. समझिए अगर तुम्हारा कोड किसी को दिया जाए और से कहा जाए कि भाई तुम इसे एक्सटेंड करो, तो क्या हिना आप उसका कोड बस देखते के साथ शुरू कर देगी करना, या पहले आपको पूरा उसका प्रोसेस परसीव करना पड़ेगा? Now this is an important thing, that so far what we have learned is that we have to understand first
कि दूसरे बंदे ने, the second person to whom I'm actually extending from, I have to understand his all work. कि उसने कौन सी memory बनाई थी, what is the memory part she has made or he has made, and then what are the functions, how they are connected, how the whole system was made. Okay? But now let me ask you this thing. मुझे एक बात बताइए, आप अपनी सामने में क्या देख रहे हैं? आपके सामने ये आपका लैपटॉप है. मुझे एक बात बताइए, क्या आपको, do you really understand that when you start this laptop and you start writing on keyboard, do you really understand how these keyboard messages are translated into zeros and ones, and how the circuitry behind the laptop, which is under your keyboard, how that actually translates into the current which actually flows through the network behind and reaches to the screen and displays you what you have actually written. Have you ever thought about it? No, never. That's how it is. Whenever you buy a car, you start, the only thing you need to understand about cars is, that's where I have to put the key, and that's how I will have to start, that's how I have to put the pressure on the accelerator, here is the brake for helping you to stop, and here is the steering to move around left or right. Okay? That's the only thing you need to understand. Isn't it? Yes. Do I need to understand each and every bit of the car? That how these wheels are actually moving? How when I press accelerator, the fuel injection increases? And how the piston actually translate that into hydraulic pressure to create that push, which actually makes my car run? No, not at all. That the only thing I need to understand and to comprehend is put the foot on the accelerator and boom. Isn't it? That's the only thing I need to comprehend. The shift which we are about to make is exactly this. What we will going to do is, we will going to divide our whole system, which we will going to program, into objects. And what we will going to do is, we will going to make sure that these objects can communicate through each other by a way. And that way will be messageless. And whatever is inside that object, we don't know. We don't care about it. What we're going to do is, instead of knowing about each and every detail of the entire system, what we're going to do is, we're going to break down the whole system into objects. And what we're going to do is, now breaking down the whole system into chunks of objects, what we're going to do is, we're going to first conquer this. First we're going to make this object, and then we're going to make this object, and we're going to make this object and this object independently in a sense that whatever is inside this object will not be visible to outside world, and whatever we're going to make inside this object will not be visible to outside. Okay? So whoever will be designing this object, he will know or she will know each and every bit inside it. But the person who will be using that object will never know what will be inside that object. That's the masterful idea. कि आपको पूरे प्रोग्राम को जानने की जरूरत नहीं है. What we're going to make sure is, we're going to design in such a fashion, that the only thing we care about is कि ये जो object है, this object, how to use that object. And that object will actually tell the world
कि ये मेरा इंटरफेस है। व्हाट इज द इंटरफेस? इंटरफेस मींस कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है इसका, वो कहेगा कि ये मेरे फंक्शन, ये मेरे, these are my functions through which you can communicate. That's it. That's it. That's how the object-oriented paradigm will going to change your thinking style. What we're going to do is we're going to look around in the whole system in terms of objects, and we're going to communicate. Okay? All right? ये तो सारी स्टोरी है, ठीक है? लेकिन ये स्टोरी समझना बड़ा जरूरी है कि how the real world thinking is actually became the building block of this paradigm shift. वो जो functional programming जिसे हम कहते हैं ना, the functional programming का सबसे बड़ा problem ये है कि the person who have to start using your work have to understand every single part of it. Okay? Otherwise वो उसे progress नहीं कर सकता. Everybody understand? Now, before moving here, let me do one example. और उसके बाद हम इसके ऊपर बात करेंगे. अच्छा एक बात सुनो. Let's say if I ask you, so the thing is how to make these objects identify. The way to identify is the following. Try to figure out जो भी system आप बना रहे हैं, whichever system you are making, try to figure out which are the nouns which I have to tackle. ठीक है? For example, अगर मैं आपको ये कहूँ कि I want you to design a human being. Okay? एक human being आपने डिजाइन करना, ठीक है? I am not asking you to give me every single detail of human being because वो तो इतनी ज़्यादा होगी कि शायद हम यहाँ लिख नहीं पाएंगे. But give me some, approximate bird eye view कि भाई मुझे कौन-कौन से noun चाहिए अगर मैंने human being को डिजाइन करना. Brain. सबसे important brain. Body. Brain, eyes, जी भाई, हाँ, heart, हाँ ठीक है, heart ठीक है चाहिए लेकिन let's say कि मैं internal body की parts की बात नहीं कर रहा, ठीक है? वो let's say फिलहाल हमने दिखाया. Head body. हाँ? Head body abdomen. Head कर लेते हैं, ठीक है? जी और then ear है. ये फेस कर लेना. हाँ? फेस कर लेना. फेस की बहुत सारी हम सारा फेस भी कर सकते हैं. हैंड्स, यू राइट. हैंड्स को मैं हैंड लिख रहा हूँ. हैंड्स को मैं हैंड लिख रहा हूँ. ठीक है? ईयर्स को मैंने ईयर लिखा है. आईज को मैंने सिर्फ आई लिखा है. ओके? ऑलराइट? मैं दो अलग-अलग नहीं भाई एक बना रहा हूँ. And there is a reason for that. You will understand in a while कि why I have written it only once. Okay? Sorry. Yeah. Feet. Leg बना. ठीक है? मैं लेग भी कर सकता हूँ. Okay, all right. Anything else? हाँ? Arms भी कह सकते हो. ठीक है? आप सारा मुझे. अच्छा. Now here is an important thing. अच्छा, master please. Whenever you identify nouns, ये जो आपने जो भी बनाए हैं ना, ये जो भी आपने चीजें बनाई हैं, इनको ना कहते हैं कि these are actually you can say कि ये हमारा skeleton है. Skeleton in a sense that this is actually, it's called आप खाका नहीं बनाते, ठीक है ना? आप sketch आपने बनाया है, but sketch में actually आपने पूरी तस्वीर भरी नहीं है. What will happen is, okay, for example, ये जो face है, face human being का, its face is just one object, but face की अंदर जितने भी nouns होंगे ना, हर noun के साथ उसके attributes associated होंगे. Attributes का for example क्या मतलब है? For example, I can say कि जो eyes हैं, eyes का क्या attribute सकते हैं? They are adjectives. So whenever you make nouns, objects, there are properties associated with that noun. And these properties are important because those properties, when filled,
they become an object. ये बात समझ में आई आपको क्या बात है कि एक्चुअली ये जो मैंने बनाया है ये एक्चुअली एक खाका बनाया है, ये मैंने एक खाका बनाया है। फॉर एग्जाम्पल आईज का एक कलर होगा, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल आपके ये जो अगर आई की बात करें तो उसकी जो ब्लैक बॉल है उसका कितना साइज है, ठीक है। उसका हम कहते हैं कि जो ये ब्लैक बॉल है उसका कितना साइज है, ठीक है। और ये देखिए बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड विद आई। एंड here is an important thing to understand. This is actually a blueprint. And when you make an so this is actually a blueprint. When you fill its values, it becomes an object. What do I mean by that? कि जब इन attributes को हम assign करना शुरू करेंगे ना, तो they become one human being's eye. तो फॉर एग्जाम्पल मेरी आईज का कोई कलर होगा, उसको जब मैं फिल वगैरह करूंगा तो वो मेरी आईज का कलर। तो फॉर एग्जाम्पल सालिक की कुछ और आईज की प्रॉपर्टीज होंगी, वो जब मैं उसे फिल करूंगा तो उसके लिए और इसका इंस्टेंस। सो ये ब्लूप्रिंट आपने बनाया ना, ये ब्लूप्रिंट का एक्चुअली क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट। These are actually what? These are actually blueprints. Okay, और इसके साथ हमें क्या असाइन करना है? जब एट्रीब्यूट्स को वैल्यू असाइन करेंगे, they become an object. Okay? The nice thing about this print is that when you can actually make many instances of समझ में क्या बात है? कि ऐसा हो सकता है कि मैं 50 आईज बनाऊंगा, तो मैं आईज के साथ एक्चुअली क्या करूंगा, मैं I1 बनाऊंगा, फिर I2 बनाऊंगा, I3 बनाऊंगा, फिर I1 के साथ एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज होंगी एंड I2 के साथ एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज एंड सो ऑन। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सो हर नाउन की, हर क्लास की यहाँ पर एवरी क्लास, एवरी नाउन हियर हैज few properties. And also there are associated behaviors. What is behavior? Behavior is associated functionality. So for example, अगर आप I की बात करो, तो I के साथ कोई functionality बताओ क्या होगी? See, actually take photo. ये actually क्या करता है? I हमारी क्या करती होगी बताओ? Actually photos लेके constantly, continuously, it is actually sending to page. है ना? तो actually take photo इसका एक अंदर प्रोसीजर होगा और साथ ही एक और भी काम होगा, वो होगा take photo लेके वो सामने में रखी थोड़ी ना, क्या करना है? send to print. तो send to ये photo send to, ये बात सुना? ये जो photo send to brain वाली बात की है, इसका मतलब है इसका ब्रेन के साथ कोई कनेक्शन होगा। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? अगर कनेक्शन होगा तो ही तो उसको सेंड कर सकता है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ये कनेक्शंस के बारे में हम बड़ी तफसील से बात करेंगे। ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना, ये आपस में कनेक्शंस कैसे बिल्ड करते हैं? हाउ डू दीज ऑब्जेक्ट्स मेक कनेक्शंस बिटवीन? Connections are important in a way that if there are connection, then they can do message passing. If they don't have any connection, then they can't send messages to each other. Everybody understand? Sure. Now, अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैं आपको थोड़ा 5-10 मिनट के लिए थोड़ा टास्क दे रहा हूँ। Everybody of you should stand up and talk to each other. Should figure out कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। अब आपने बेटा कुछ काम करना पड़ेगा, इन सारी आई, ब्रेन, हेड, ईयर, आर्म, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी डाली तो प्रॉपर्टी डाल सकते हैं, बिहेवियर जरूर डालें, ठीक है। मैं आपको एक इवेंट बता रहा हूँ और आपने उस इवेंट के बारे में बात करनी है कि मैं इस पूरे इवेंट के साथ ये सारे ऑब्जेक्ट्स आपस में कैसे कम्युनिकेट करें, हाउ डू दे कम्युनिकेट विद ईच अदर टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन। एंड हियर इज द प्रॉब्लम इज, इमेजिन यू आर स्टैंडिंग हियर, इमेजिन यू आर स्टैंडिंग हियर एंड एट द डोर स्टेप you find out that there is a snake. There is a snake. Okay? And what do you want to do? You want to go outside the bank. How you will going to make sure to communicate these objects through their behavior, through their functionalities, to make sure
that you go outside the way. ठीक है? आपको रास्ता लगे, ठीक है? Everybody understand? Now the thing is how you will communicate these objects together to make sure that you are able to escape that snake. Everybody understand? Yes, sir. Identify all the properties and also the functionalities through which you will want to communicate to उसके